Hello everyone. Thank you for having me. I welcome you all to your YouTube channel Acme Maths Tutorial. आज की ये वीडियो काफी खास होने वाली है बिकॉज ये एक डाउट सेशन वीडियो है। हमारे एक स्टूडेंट ने हमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो डाउट में पूछे हैं और हम उसे आज सॉल्व कर कर उनके डाउट्स क्लियर करेंगे। राइट। तो ये जो क्वेश्चंस है वो 12 साइंस चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा में से पूछे गए हैं। राइट। ये मिसेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 है, जहां पर ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेंगे ये जो वेक्टर है इसे ए आई प्लस जे प्लस के। राइट। तो आई कैन कन्वर्ट दिस एज 1,1,1 यू नो दैट राइट। एंड अगर ये x जो स्केलर क्वांटिटी है वो इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी, then I will get x comma x comma x. This is my vector a. Now it is already given in the question that ये जो vector a है उसका magnitude 1 है, right? Because it is a unit vector. So taking the magnitude of vector a as x square plus x square plus x square as 1. So I will get 3x square as 1. Taking square on both the side, I will have 3x square as 1 whole square. 1 square is 1. So I will have x square as 1 by 3. Now taking root on both the side, I will get x as plus minus root 1 by 3, which can be written as plus minus root 1 is 1 and root 3 is root 3. Okay, let's understand the next question. ये भी miscellaneous exercise का ही 7th question है. The question is, if a vector is I plus j plus k, b vector is 2i minus j plus 3k, and c vector is I minus 2j plus k, then find the unit vector parallel to the 2a minus b plus 3c. सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर को समझेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, 1 यूनिट। राइट। सो व्हाट विल हैपन इफ अ वेक्टर इज नॉट हैविंग अ मैग्नीट्यूड 1, तो उसे हम यूनिट वेक्टर नहीं कहेंगे। बट किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। राइट। एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर कर यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करेंगे। बट बिफोर दैट we need to simplify this to a minus b plus 3c. Okay, so let's proceed with the solution. Here a vector is given I plus j plus k. ये एक वेक्टर फॉर्म में दिया है। इसे हम अगर स्केलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना चाहे तो आई कैन राइट वेक्टर a as 1,1,1, वेक्टर b जो 2i माइनस j प्लस 3k दिया हुआ है, आई कैन राइट दिस वेक्टर b as 2 minus 1 plus 3. c वेक्टर जो i minus 2j plus k, I can write this as 1 minus 2 1.
So I will assume this as z vector. Which one? 2a minus b plus 3c. तो बेसिकली हम पहले z वेक्टर को ढूंढेंगे और फिर उसे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में डाल देंगे, जिससे हमें वो यूनिट वेक्टर जो पैरेलल टू दिस वेक्टर 2a माइनस बी प्लस 3c जो है उसे पैरेलल यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. तो विल सिंप्लीफाई दिस. वेक्टर a गिवन इज वेक्टर b plus 3 into vector c. Right. You know that scalar and vector क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन में हम इस तरह से सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और पहले ये दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं. इंडिविजुअल करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे. 2 minus 2 will give me 0. 2 minus minus that is plus 1 will give me 3. 2 minus 3 will give me minus 1. And we are having 3 minus 6, 3. So if I add this corresponding coordinates को, मतलब corresponding components को हम ऐड करेंगे. 0 plus 3, 3 minus 6, minus 1 plus 3. Right. This is my z vector. Now I am interested in finding a unit z vector. So definition is z divided by its magnitude. So magnitude of z is 3 square plus 3 square plus 2 square. Right. So it's root 22. So we'll individually divide with each and every component. 3 by root 22 minus 3 by root 22, 2 by root 22. And I can convert this into vector form as 3i by root 22 minus 3j upon root 22 plus 2k upon root 22. Right. So this is my required unit vector parallel to the given vector. Okay, so let's try to understand the 8th question. This is again miscellaneous exercise से है, chapter 10. Show that the point A, B, and C are collinear and find the ratio in which B divides AC. तो वैसे कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज है. विल फॉलो द सिंपलेस्ट वन. इस केस में हम लोग वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के कंपोनेंट्स डिराइव करेंगे और फिर उनके कंपोनेंट्स का रेशियो लेंगे. अगर हर बार रेशियो सेम आता है तो इट इज प्रूव ये दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है. So if I am interested in finding vector AB, then it is position vector of B minus position vector of A. That is 5, 0, minus 2, minus 1, minus 2, minus 8. Subtracting, I will get
4 minus minus plus, this is 2 minus minus plus, it is 6, right? The same way I will find BC vector, which is position vector of C minus position vector of D. Right. So keeping the coordinates or component of C, I will get this can also be said as a direction ratios, right? 6, 3, and 9, right? So we'll take the individual ratios of AB. So here it is 4 and here it is 6. So the answer I am getting on simplifying this will be 2/3. उसी तरह से हम 2 और 3 का रेशियो लेंगे, इट इज 2 and 3. अगेन यहाँ पर 6 and 9 का रेशियो लेंगे, दोनों 3 के टेबल में जो है वो कट होंगे. So you can see that every time we are getting the same value and the value is also positive, right? So with all the ratios same and ratio being positive and we have point B in common, we can say that A, B and C are collinear, right? ये हम कह सकते हैं. So ये first part prove हुआ. Now they have asked कि find a ratio in which B divides AC. So we'll draw one. Here it is given. We'll assume let B divides AC in ratio m/n. तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सेक्शन फॉर्मूला है MC, m into C and plus n into A upon m plus n. Keeping the values of the coordinates or the point B is 5, 0, minus 2, m is m into C. C is 11, 3, 7 plus n into 1 minus 2 minus 8 upon m plus n. So 5, 0 minus 2 is equal to 11m plus n divided by m plus n. इंडिविजुअल m जो है वो मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड होगा. यहाँ पर भी n जो है इंडिविजुअल सबसे मल्टीप्लाई होगा और फिर एडिंग होगा. तो 3m minus 2n upon m plus n. And the last one will be 7m minus 8n upon m plus n.
So on comparing फर्स्ट कंपोनेंट को ही, दैट इज एक्स कंपोनेंट को ही कंपेयर कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 11। ट्रांसपोजिशन करेंगे और लाइक टर्म्स को साथ में लाएंगे तो आई विल हैव 4n इज इक्वल टू 6m। तो 4/6 is equal to m/n. So I can say m is to n is simplifying the ratio 4/6 को simplify करेंगे तो 2:3 आएगा. So we can say that B divides AC in the ratio 2:3. Okay, let's try to understand 10th question. Miscellaneous exercise का ही 10th question है, जहां पर question दिया है the two adjacent sides of a parallelogram are a vector A 2i minus 4j plus 5k and vector B 1 minus 2j minus 3k. Find a unit vector parallel to its diagonal and also find its area. Right. तो हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर की दो मेथड्स देखी थी. वन ऑफ द मेथड वाज द method using parallelogram. See, if I draw this, अगर मैं ये एक वेक्टर ड्रॉ कर पाऊं, वेक्टर ए एंड सेम वेक्टर इसी इनिशियल पोजीशन से अगर मैं ड्रॉ करूं वेक्टर बी, तो इन इसे अगर मैं पैरेललोग्राम बनाने की ट्राई करूं, मींस कॉपिंग दिस वेक्टर बी हियर एंड कॉपिंग दिस सेम वेक्टर ओवर हियर, राइट. इस तरह से मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को कॉपी कर कर एक पैरेललोग्राम बना दिया. तो ये इनका जो डायगोनल होगा will be the resultant addition of vector A and vector B, right. ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर में पैरेललोग्राम की हमने जो मेथड थी उससे पढ़ा था. तो हियर हमें क्या बोला है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायगोनल फाइंड करना है. डायगोनल फाइंड करने के बाद हमें उसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है, बिकॉज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल. अगर डायगोनल फाइंड करने हैं तो उसके दो डायगोनल होते हैं, एक a प्लस बी और एक दूसरा हो जाता है a माइनस बी. राइट नाउ हम लोग सिर्फ एक ही डायगोनल a प्लस बी वाले पे फोकस करेंगे. तो पैरेललोग्राम का डायगोनल चाहिए तो उनकी एडजेसेंट साइड्स को आप ऐड कर दो तो यू विल गेट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो वन ऑफ द एडजेसेंट साइड इज 2, दैट इज एडजेसेंट वेक्टर, और b जो है वो 1 minus 2 minus 3, right. So adding this will give me 3 minus 6 2. Unit vector d will give me vector divided by its magnitude. ये unit vector का definition है, right. Finding the magnitude of d will give me 9 plus 36 plus 4. Root 49 will be 7. So dividing 7, this is my unit vector along the direction parallel to the diagonal, right. I can write it in this format too. ये पार्ट खत्म हुआ, राइट. दूसरा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. अगर दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई है पैरेललोग्राम की तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. नाउ ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे हम लोग, दैट इज
वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपलेस्ट वे जो है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का, एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए एक्स को छुपाओ और बाकी के जो दिखते हैं उन्हें एज इट इज डायगोनल में आप पुट कर दो। वाई के लिए माइनस वाई को छुपा दो एंड जो भी दिखता है, सर्कल करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, इसे वाई को छुपा दो। राइट। सो बचा यहाँ पे 2 5 1 - 3। वाई में इसे नेगेटिव लिया जाता है और z फाइंड करने के लिए यहाँ पर z कंपोनेंट्स को हाइड कर देंगे हम लोग। तो उसे हाइड करने पर हमें क्या मिला, 2 - 4 1 - 2। राइट। ये x जो कंपोनेंट है उसमें हमने ये x के कंपोनेंट इस तरह से हाइड कर दिए थे। राइट। तो ऐसे अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे। दिस इज 12 + 10 will give me 22. This is -6 -5 will give me -11। बाहर एक और माइनस है, will give me प्लस। This is -4 + 4 will give me 0. So if I'm interested in finding the magnitude of A cross B, then it is 22 square + 11 square। यहाँ पर भी हम टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, राइटिंग 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11 स्क्वायर, राइटिंग 22 एस 2 इंटू 11 और दोनों को स्क्वायर दे दिया तो 2 स्क्वायर 11 स्क्वायर और पीछे 11 स्क्वायर। नाउ आई कैन टेक 11 स्क्वायर कॉमन आउटसाइड to have 2 square plus 1, right? 2 square is 4 plus 1 5. So 11 square root will be 11 and this is √5 square unit, right? और else नहीं समझ में आए तो एक्सपांड कर लो। You will get a factor of 121, right? 121 फाइजा जो भी होगा वही रूट के अंदर आएगा। आप उस तरह से भी फाइंड कर कर ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। Okay, let's understand 12th question. It is again from miscellaneous exercise chapter 10. यहाँ पर हमें एक वेक्टर डी फाइंड करने के लिए बोला गया है जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है एंड C.D का डॉट प्रोडक्ट का आंसर 15 है। आई विल अज्यूम लेट डी वेक्टर इज एक्स वाई जेड। Here it is given that A and D are perpendicular to each other, मतलब उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का आंसर डेफिनेटली 0 होगा। ए वेक्टर हमने नोट डाउन कर लिया है, A डॉट D इज 0। तो x + 4y + 2z is equal to 0। Give this as equation 1। अगेन ये जो D वेक्टर है वो बी से भी परपेंडिकुलर है, मतलब बी का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ का 0 होगा। दिस इज माई बी। 3 - 2 7 डॉट प्रोडक्ट XYZ। तो 3x - 2y + 7z is equal to 0। Give this as equation 2 and it is already given that C dot D is 15। Vector C dot vector D is equal to 15। So C is 2 - 1 4 dot XYZ is equal to 15। So 2x - y + 4z is equal to 15। Give this as 3। Now you have 3 equations and 3 वेरिएबल। हमारे पास बहुत सारी मेथड है इसे सॉल्व करने के लिए, बट इसे हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे हमारा मैट्रिक्स मेथड का जो रिवीजन है
वो भी हो जाएगा। और एल्स आप और कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड है, क्रैमर्स रूल है। तो विल राइट वन स्टेटमेंट, आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हियर बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है। तो दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स फॉर्म एज, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सारे कोएफिशिएंट्स हम नोट डाउन कर लेंगे। Here x y z and here b, right? So this can be written as ax is equal to b, and if I'm interested in finding x, then I can write it as a inverse into b. a inverse find करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा 1 into -8 + 7। फर्स्ट रो को यूज कर कर मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। 12 -14 +2 into -3 + 4। So this will be -1 minus plus 4 2 are 8, 4 minus 3 1, 2 1 are 2. So you can see that it is 10 minus 1 9, not equal to 0. A inverse exists. अब हम adjoint of A find करेंगे। ओके, तो हमने ये मैट्रिक्स ए जो है वो नोट डाउन कर लिया है। अब हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे, सभी जगह से कोफैक्टर फाइंड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिले। तो ये 1 का कोफैक्टर होगा -8 + 7 विल गिव मी -1। इसका कोफैक्टर होगा 12 -14 -2, लेकिन +2 लेंगे। इधर -3 + 4 विल गिव मी +1। राइट वाइज 3 का कोफैक्टर होगा, 3 के रो और 3 के कॉलम को छुपा देंगे तो 16 + 2 it will be 18, but it will be -18। 4 -4 will give me 0। This will be 7 का कोफैक्टर होगा -1 -8 -9, राइट। 2 का कोफैक्टर होगा 28 + 4 32। -1 का कोफैक्टर होगा 7 -6 1, लेकिन -1 लेंगे। दिस इज -2 -14, right? So adjoint of A is taking the transpose of this will give me -1 -18 32 2 0 -1 1 -9 -14. So my equation becomes A inverse into B, keeping A inverse as 1 upon determinant of A into adjoint of A into B. So x is x y z is equal to 1 upon determinant of A is 9, adjoint of A is -1 -18 32 2 0 -1 1 -9 -14 0 0. This is last is 50, right? So now मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख देते हैं।
-1 into 0, 0, 0, -18 into 0 is also 0, and this is 32 into 15 will give me 480. Likewise, it will be 0 plus 0 minus 15, and this will be 0 plus 0 minus, it will be 14 into 15 will give me 210. So this is 1 by 9, 480 minus 15 minus 210. So value of x is 480 by 9, which can be simplified as 160 by 3. The value of y is minus 15 by 9, which can be simplified as minus 5 by 3. The value of z is minus 210 by 9, which can be simplified as minus 70 by 3. So keeping in D, the vector D is x, y, z. So keeping that, I will have 160 by 3 minus 5 by 3 minus 70 by 3. आई थिंक इसके आंसर में पीछे गलत दिया है. When I was discussing with my students, मेरे को पता लगा था कि it is plus 70 by 3 given at the back. So plus 70 by 3 is not correct. That's minus 70 by 3. और एल्स आपके पास और बहुत सारी मेथड है इन एक्स वाई जेड की वैल्यूज लाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि हमारा एक फोर्थ चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए. दैट्स वाई हमने मैट्रिक्स मेथड जो है वो सिलेक्ट की. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द 13 क्वेश्चन. ये भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I plus j plus k with the unit vector along the sum of these two vectors is equal to 1. Find the value of lambda. Here मैं lambda नहीं लिख पा रहा था, इसीलिए y लिखा है. You consider this as lambda, right? तो हमें एक वेक्टर a दिया है जो 1 1 1 है, जिसका डॉट प्रोडक्ट विथ z के यूनिट वेक्टर. अब z इज b प्लस सी, राइट? b को हम ये वेक्टर ले लेते हैं 2 4 माइनस 5, और सी वेक्टर ले लेते हैं लैम्बडा 2 3, राइट? तो z जो है वो इन दोनों के समेशन का आंसर है b प्लस सी का, और उसके यूनिट वेक्टर से हमें ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट लेना है, और आंसर 1 दिया हुआ. तो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल z. हमने z अज्यूम किया है b प्लस सी. यहाँ पर इन्होंने बोला है अलोंग द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स, राइट? तो इन दोनों b और c के सम का यूनिट वेक्टर जो है हम ढूंढने की ट्राई करेंगे. तो इट्स 2 प्लस लैम्डा कॉमा 6 कॉमा माइनस 2. तो यूनिट वेक्टर विल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो 2 प्लस लैम्डा कॉमा 6 कॉमा माइनस 2 अपॉन रूट 2 plus lambda whole square plus 36 plus 4, right? So this is my unit vector. Now it is given that vector a into unit vector z is 1. So my a is 1 1 1, taking dot product with this vector 2 plus lambda 6 minus 2 upon root 2 plus lambda whole square plus 40 is equal to 1.
So taking the product will give me 2 plus lambda plus 6 ones are 6 minus 2 upon root lambda plus 2 whole square plus 40 is equal to 1. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 2 minus 2 will get cancel out and I'm left with lambda plus 6 is equal to square root. If I expand this, lambda square plus 4 lambda plus 4 plus 40. Taking square on both the side, I will get lambda plus 6 whole square is equal to lambda square plus 4 lambda plus 44. Expanding this will give me lambda square plus 12 lambda plus 36 is equal to lambda square plus 4 lambda plus 44. Here lambda square will get cancelled out. 4 will come over here. Subtraction hoga. 12 minus 4 will give me 8 lambda. And 44 minus 36 will again give me 8 only. So dividing 8 with 8 will give me lambda as 1. Okay. Let's try to understand the 14th question. 14th question is also from miscellaneous exercise only. If A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, show that the vector A plus B plus C is also equally inclined to A, B and C. तो यहाँ पर क्योंकि magnitude of A, B and C जो है वो सब equal है, तो I will assume it is K. Magnitude of A, B and C सबके magnitude K है and they are mutually perpendicular. is मतलब A dot B, B dot C and C dot A is 0. Now I'm interested in finding the magnitude of A plus B plus C vector. So what I will do is I will square that. So it is magnitude A square plus magnitude B square plus magnitude C square plus 2A dot B plus 2B dot C plus 2C dot A. This will give me A plus B plus C vector as whole square as K square plus K square plus K square. And you know that the dot product of all this is 0. So finally, this will be 3K square. Taking root on both the side will give me the magnitude of A plus B plus C, which is root 3K. So now I will assume let the angle between vector A and A plus B plus C is theta 1. Right. So अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 1 है, तो यूजिंग द फॉर्मूला cos थीटा 1 इज इक्वल टू A plus B plus C dot A upon magnitude of A into magnitude of A plus B plus C. This is the formula we have. So now यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, तो A into A magnitude A square plus B dot A plus C dot A upon magnitude of A plus B plus C, it is root 3K into magnitude of A is K. Magnitude A square is K whole square. बाकी के ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 है. Root 3K square. So K square will get cancelled out and I will have 1 by root 3. Similarly, we will assume that the
एंगल बिटवीन बी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज थीटा टू. तो cos थीटा टू इज a plus b plus c dot b upon magnitude of a plus b plus c into magnitude of b. Keeping the values, I will have a dot b plus magnitude b square plus b dot c. Upon this will be root 3k into k. Now a dot b and b dot c ये दोनों जीरो है. तो ऊपर सिर्फ मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर रह जाएगा. तो cos थीटा टू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर अपॉन रूट थ्री. नीचे के स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट एंड दिस विल बी रूट थ्री. So here you are getting cos theta 2 as also 1 by root 3. Similarly, I can say that, or it can be proved that cos theta 3 will also be 1 by root 3. So you can see that आप इसे ट्राई कर सकते हो. थीटा 3 is the angle between a plus b plus c and c vector. That result will give you the same answer. तो यहाँ पर आप cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3, सबका आंसर सेम ही आ रहा है. तो वी कैन से दैट वेक्टर a प्लस b प्लस c इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर a b एंड c. होप आपको ये सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे. यू आर ऑलवेज वेलकम. आप जब भी डाउट आए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए. टिल देन हैप्पी लर्निंग. गुड बाय.